Obviously, the manifesto has to be got ready by the time the Election Commission decides the dates. No, since I don't know those dates, I can't give you a deadline. But the effort is to get the Good morning to all of you. ready for the I have Congress with Working me Committee as soon as Mr. possible. T.S. Singhdeo Internally, I would like to do it and by Ms. February 15, but let's see Shri how the progress is. On the second question, yes, As you are perhaps aware that there is on a the manifesto committee criminal law bills, for the you know that we have submitted 2024 detailed dissent Lok notes. Sabha manifesto. My The committee dissent was note constituted and, by the Congress President. Mr. Digvijay Singh's dissent note, I'm the chairman of the Mr. committee, and Adhiv my Ranjan Chowdhury's distinguished dissent friend, note are all in Mr. the Singhdeo, public is the domain. convener of the committee. How much of that will go The into the committee manifesto, I has can't 15 say. other Because members. ultimately, the manifesto has to be approved by the The committee has Congress already Working met Committee. twice. But surely, as I speak The today, committee has there will be a distributed the work reference among the members, in the manifesto and the members are to the many, many unjust work laws in different passed states by of the the country. Modi government. And one set of unjust laws The present exercise is the to 3 criminal bills. receive suggestions from the members of the public. Yes. This सर will अक्सर be आप a लोग मोदी people's सरकार manifesto. और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे So हैं it's और आपका बड़ा important मुद्दा to भी रहा है लेकिन अभी हाल ही में आपकी gather तेलंगाना सरकार as ने एक बड़ा many MOU साइन किया है अडानी suggestions के from the साथ people उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें as possible. मुझे लगता है in कि ये the मैनिफेस्टो लॉन्च few की weeks प्रेस that वार्ता are है और हम available इसी to पर us. केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन principal मैनिफेस्टो लॉन्च vehicle एक बड़ी for चीज है और जिस तरह से हम इसको करने collecting की suggestions will कोशिश be कर रहे public हैं उसमें पूरे देश की consultations. आवाज प्रतिबिंबित हो, लोगों का Public सुझाव लेकर consultations will be लर्निंग टू held लिसन in every टू पीपल इज state. वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू Members of the committee have मन की taken बात एक आदमी की responsibility for सुनकर 1 10 or साल 2 से ये देश states उकता गया है, each. हाथ जोड़ के कह रहा है हमारी बातों को And they सुनिए और are वही काम कांग्रेस हमेशा से करती है। in the process वही काम of राहुल fixing गांधी जी the भारत dates जोड़ो and the यात्रा में भी venue कर रहे थे, अब भारत and जोड़ो न्याय inviting यात्रा में भी people कर to रहे those हैं। public इसकी प्रमुखता को और consultations to इसकी make the इम्पोर्टेंस को suggestions. थोड़ा सा और उजागर करने की Today जरूरत we है जो are हम यहाँ पे करने की launching कोशिश कर रहे हैं। Another मैम चूंकि vehicle कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो to collect आप लोग कमेटी suggestions. जो बनाई है, लेकिन जो सहयोगी The आपके जो first दल है is इंडिया there will be an गठबंधन के, email वो लोग भी अपने अपने ID. मैनिफेस्टो बनाएंगे। क्या उनसे भी कोई We सलाह मशवरा invite किया जाएगा people of इस India बीच में और बाद में कोई कंबाइन send their संयुक्त तौर पर कोई suggestions by मैनिफेस्टो जारी किया email. जाएगा? I have It will be answered the demonstrated question to you when presently she by asked me. Ms. Supriya Shrinet. Anyone is welcome to the public consultation. We will collate the all allied the parties emails that we want receive to on that participate in email the public ID, consultation, they are welcome. divide them into But whether subjects they will be and address at the highest level the consultations suggestions which between the are Congress party received and and try to India incorporate group parties as many is as not a matter possible that in the manifesto. we can decide. That's a matter that will be decided The by second the Congress vehicle that we are President launching and today the other parties' leaders. is a website But I suppose they that will will talk also to be each other demonstrated to at you. some stage, and whether there will The be website a India gives you an manifesto, I option can't say. to go I'm only subject-wise talking about and the send Indian your National suggestions. Congress's manifesto. When the demonstration takes place, you will understand how it works. So these are 2 more vehicles along with the public consultations in घोषणा order पत्र to समिति बनी है। ये अखिल भारतीय involve the कांग्रेस people कमेटी of की India घोषणा पत्र in the समिति है, तो making of the स्वाभाविक है manifesto. कि ये घोषणा पत्र अखिल We भारतीय sincerely कांग्रेस hope कमेटी अपने that संगठन और thousands अपने and माध्यम से thousands करेगा। of people, इंडिया especially अलायंस young समूह people, जो women, गठित हुआ है, जो farmers, चल रहा है, ये किस workers, स्तर पे people from गठबंधन को every ले walk जाएगा, of सीट life. शेयरिंग की ही बात We होगी या कॉमन sincerely मैनिफेस्टो appeal होगा, and ये शीर्ष invite स्तर you पे सभी दलों to के use जो इंडिया these अलायंस के vehicles साथी हैं, and give उस स्तर the पे Indian इसका National निर्णय हो Congress सकेगा। the suggestions that you would like incorporated in the manifesto. Sir, as you in said order that to make it a most of the truly public opinions are people's welcomed in this manifesto for the manifesto through website or through 2024 email. Lok Sabha Through elections. website, there are some Now I'll specific invite, points that you my said that distinguished anyone can colleague, go on Mr. and Singhdeo, can to give their speak a suggestions few or words in opinions. If, Hindi. ma'am, you can also elaborate on what specific points or any, or धन्यवाद it's सर। open. आप सभी को
प्रणाम। It's open. नववर्ष If there is a संक्रांति drop-down और menu, then आने what? वाले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं No, बधाई। if there is a drop-down menu, then what are those points? If you can just elaborate on that, ma'am. जैसा चिदम्बरम सर ने Put in your बताया, अखिल name, your भारतीय PIN कांग्रेस code and your कमेटी mobile के number. अध्यक्ष You ने will receive an OTP. Once you receive an आने OTP, वाले you will have an access लोकसभा to चुनाव writing के लिए space. I don't think we can घोषणा restrict पत्र people by writing on बनाने subjects. के I लिए think समिति people का should write निर्माण what they किया है। honestly feel the Indian चिदम्बरम National सर Congress should raise उसके in our manifesto, चेयरपर्सन and we हैं। give them that liberty to मुझे do so. संयोजक की जवाबदारी दी गई है। We will हम of दोनों के course, अतिरिक्त read 15 every और suggestion सदस्य हैं and इस classify it समिति में। subject-wise, because the manifesto समिति के eventually सदस्यों ने will have different sections. अपने and each विकल्प से section will deal with कम one से or कम two 2 राज्यों related को subjects. चिन्हांकित किया So है। when you send इन a राज्यों में suggestion, वो जाकर say, सघन you may, विचारों का send your आदान प्रदान suggestion on 3 or 4 आम जनों से करेंगे, It's our समूहों से करेंगे, responsibility संगठनों से करेंगे, to segregate पार्टी them के and put them in कार्यकर्ताओं से भी different, करेंगे। boxes. और सभी then, प्रदेश read कांग्रेस them, कमेटी के अध्यक्ष understand और them, कांग्रेस reflect on लेजिस्लेचर them, पार्टी के and then make a अध्यक्षों को भी manifesto सूचना point. दी गई है That's कि our वो अपने माध्यम responsibility से and we will do it. ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश में भी सुझावों का संकलन करें और जो साथी समिति के जाएंगे उनके साथ भी आदान प्रदान करें और समिति के को अपने जानकारी से वो अवगत करा सकें ताकि ये जो घोषणा पत्र बनेगा ये केवल एक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहे। जिनके लिए घोषणा पत्र बनना है, जिनके हित के लिए घोषणा पत्र बनना है, Time is आम so नागरिक limited, देश का, भारत का, unlikely. वो भी अपनी सहभागिता निभा Some of it सके will come और up in इस the बाबत discussions and ये प्रयास after किया the जाएगा जहां discussions, आमने सामने भी possible चर्चा that हो सके। it's possible जहां that तक हम one or नहीं two पहुंच पाएंगे या suggestions लोग हम तक नहीं will, पहुंच पाएंगे उनके be लिए shared आज with के the public. तकनीकी युग But में I think that time is so limited ईमेल के माध्यम that से we और can't एक have वेबसाइट a के माध्यम से back and forth, सुझाव खुले on तौर the पे manifesto. आमंत्रित हैं। 90 करोड़ से ज्यादा Is that right? मोबाइल फोन Thank you very देश में much. नागरिकों के Good day. हाथों में Thank है। you. उस माध्यम से भी हमने विचार आमंत्रित किए हैं, सुझाव आमंत्रित किए हैं और जो सुप्रिया जी अभी आपको जानकारी देंगी, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देंगी कि किस तरह से हम चाहेंगे कि लोगों के सुझाव आ सकें और उनका संकलन करके घोषणा पत्र तैयार हो और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी तक जाकर उनकी सहमति और अनुमति के बाद उसका प्रकाशन हो सके। जितने सदस्य हैं उनको अपने प्रदेशों के अतिरिक्त उनकी रुचि, विशेष रुचि के विषयवार भी जवाबदारी दी गई है कि उन विषयों में जिनमें उनकी विशेषज्ञता है उनकी जानकारियों का भी संकलन करके घोषणा पत्र के लिए वो सुझाव उपलब्ध कराएं। और आपसे भी ये निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से हमारा सहयोग करें। देश के निर्माण में आने वाले 5 सालों के लिए, आने वाले दशकों के लिए इस घोषणा पत्र के माध्यम से हम आगे बढ़ सकें और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना, आपके माध्यम से आपके मीडिया हाउसेस के भी सुझाव, आपके व्यक्तिगत सुझाव भी आमंत्रित हैं। इस पहल में आपकी सहभागिता और आपका सहयोग विशेष आमंत्रित है। Now the demonstration of the website and how to send suggestions on the email ID and on the website. थैंक यू वेरी मच चिदम्बरम साहब एंड टी सिंहदेव साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने वेबसाइट है आवाज़ भारत की। ये एक इनिशिएटिव है और ये एक पहल है कि लोगों के सुझावों से, लोगों का जो मंतव्य है उसके आधार पर हम अपना वचन पत्र, अपना मैनिफेस्टो बनाएं, उसमें लोगों की आवाज़ प्रतिबिंबित हो। और इसीलिए आवाज़ भारत की ये वेबसाइट है, इस पर आप लॉग इन कर सकते हैं awazbharat.in। और इसी में एक सेक्शन है, अगर आप जाइएगा, 2 तरह से अपना सुझाव जनता दे सकती है। एक है ईमेल आईडी जो आपको नीचे दिख रहा है awazbharat.in। इस ईमेल आईडी के जरिए आप इस पर ईमेल भेज सकते हैं। अन्यथा अगर हम क्लिक करें यहीं पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर आप इसको क्लिक करिएगा तो इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर
और आपका पिन कोड आपको डालकर, और फिर वो आपको सुझाव लिखने की जगह देगा और वहीं पर सुझाव लिख के आप क्लिक कर सकते हैं अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, वो ओटीपी आएगा और उस ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगा कि आप ही हैं, आप ही के फोन नंबर से वो लिंक्ड है, और फिर वहां पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ये सारी पहल इसलिए है कि लोगों की आवाज प्रमुखता से मुखरित हो इस वचन पत्र में, इस मैनिफेस्टो में, और जनता की आवाज को सुनने का काम हमने हमेशा किया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक प्रतिबिंब है। और मैनिफेस्टो और वचन पत्र भी 4 लोग कमरे में नहीं बनाएंगे जैसा कि अन्य लोग करते हैं, बल्कि जनता के मुद्दे उसमें प्रतिबिंबित हो। I'll just repeat this in English for the benefit of everybody who wants to write in that language. If you can go back to the main page of the website. The website is awazbharatki.in. There are 2 ways through which you can send your suggestions. Please scroll down. One is to simply write in to us at awazbharatki.in is the email ID. At inc.in, awazbharatki@inc.in. You can either email us through the website, or you can send us a separate email as well with your suggestions, with whatever you would want us to carry in the manifesto, and we are here to listen to you, because listening to the people is what we have been doing, and that is what even our poll promises are going to be. The other way you can do it is on the website itself. You click submit your suggestion on the website. You will be asked to enter your name, your PIN code, and your mobile number, after which you get an OTP, and then a section in which you can fill in your suggestions. It's quite as simple as that. This is a way to gather as many suggestions as possible in this digital age. They will, of course, like Chidambaram Saab said, like T.S. Singhdeo Saab said here, there will be on-ground consultations, but this is a way to get as many people involved in the manifesto making exercise as possible. The website is now live. It's awazbharatki.in. Please log in and send your suggestions. ये वेबसाइट अब लाइव है, आप इस पर इसी समय से जाकर अपने सुझाव भी भेज सकते हैं, और उस ईमेल आईडी पर अपना मंतव्य जरूर भेजिए। Thank you. Are there any questions? Yes. Yes. So since you are holding, you said you're holding consultations in different states. How many states are being covered? Are there any figures? And when you're holding consultations in the states, would you also be consulting your local allies about some issues that may be common or something like that? I think the idea is to hold a consultation, at least one consultation in each state. It's possible that in some states there may be more than one consultation, but the goal is to have at least one public consultation at a place in every state. Now, of course, everybody is welcome to the public consultations. If allied parties, India group parties wish to attend the consultation, they are most welcome. But there will be, whether there will be closed room consultations with the India group, that's a matter which will be taken up by the India group coordination committee. The Congress president will take it up at a leader to level consultation. I can't speak about that, but there will be public consultations in every state, at least one per state. Sir, have you set any deadline for the whole process when the manifesto will be prepared? And second thing is that this, in the recent amendment, the CRPC, there was a very... No. Let's confine this to the manifesto. We'll come to other subjects later. So I'm just asking about about your manifesto only. तो उसको लेके बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स में गुस्सा था, स्ट्राइक भी रही थी. तो क्या CRPC में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसको एक अमेंडमेंट को तो होल्ड किया है गवर्नमेंट ने, तो क्या आप लोगों के मैनिफेस्टो में ये बात भी होगी कि उनको रिपील करने के लिए या उनको चेंज करने के, उनमें अमेंडमेंट लाने की भी आप लोग बात करेंगे या कंसिडर करेगी आपकी जो ये कमेटी है? No, obviously the manifesto has to be got ready by the time the
Election Commission decides the dates. Now, since I don't know those dates, I can't give you a deadline, but the effort is to get the manifesto ready for the Congress Working Committee as soon as possible. Internally, I would like to do it by February 15, but let's see how the progress is. On the second question, yes, on the criminal law bills, you know that we have submitted detailed dissent notes. My dissent note and Mr. Digvijay Singh's dissent note, Mr. Adhir Ranjan Chowdhury's dissent note are all in the public domain. Now, how much of that will go into the manifesto, I can't say, because ultimately the manifesto has to be approved by the Congress Working Committee. But surely, as I speak today, there will be a reference in the manifesto to the many, many unjust laws passed by the Modi government. And one set of unjust laws is the 3 criminal bills. Any other questions? Yes. सर अक्सर आप लोग मोदी सरकार और अडानी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और आपका बड़ा मुद्दा भी रहा है, लेकिन अभी हाल ही में आपकी तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा एमओयू साइन किया है अडानी के साथ, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो। मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो लॉन्च की प्रेस वार्ता है और हम इसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं। ये सवाल आप अन्यथा मत लीजिए मेरी इस बात को, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च एक बड़ी चीज़ है और जिस तरह से हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरे देश की आवाज़ प्रतिबिंबित हो, लोगों का सुझाव लेकर लर्निंग टू लिसन to people is very important and that's what we are trying to do here. मन की बात एक आदमी की सुनकर 10 साल से ये देश उकता गया है, हाथ जोड़ के कह रहा है हमारी बातों को सुनिए, और वही काम कांग्रेस हमेशा से करती है, वही काम राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में भी कर रहे थे, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी कर रहे हैं। इसकी प्रमुखता को और इसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा और उजागर करने की ज़रूरत है, जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, चूँकि कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो आप लोग कमेटी जो बनाई है, लेकिन जो सहयोगी आपके जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो लोग भी अपने अपने मैनिफेस्टो बनाएंगे, क्या उनसे भी कोई सलाह मशवरा किया जाएगा इस बीच में, और बाद में कोई कंबाइन संयुक्त तौर पर कोई मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा? I have answered the question when she asked me. Anyone is welcome to the public consultation. If the allied parties want to participate in the public consultation, they are welcome. But whether there will be at the highest level consultations between the Congress party and the India group parties is not a matter that we can decide. That's a matter that will be decided by the Congress president and the other parties' leaders. But I suppose they will talk to each other at some stage, and whether there will be a India manifesto, I can't say. I'm only talking about the Indian National Congress's manifesto. Maybe Singhdeo can say this in Hindi. जो घोषणा पत्र समिति बनी है, ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र समिति है, तो स्वाभाविक है कि ये घोषणा पत्र अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने संगठन और अपने माध्यम से करेगा। इंडिया अलायंस समूह जो गठित हुआ है, जो चल रहा है, ये किस स्तर पे गठबंधन को ले जाएगा, सीट शेयरिंग की ही बात होगी या कॉमन मैनिफेस्टो होगा, ये शीर्ष स्तर पे सभी दलों के जो इंडिया अलायंस के साथी हैं उस स्तर पे इसका निर्णय हो सकेगा। Sir, as you said that most of the public opinions are welcomed in this manifesto through website or through email. Through website, there are some specific points that you said that anyone can go on and can give their suggestions or opinions. If, ma'am, you can also elaborate on what specific points or it's open. No, It's See, open. The drop-down menu. If there is a drop-down menu, then what? Anybody write in on any suggestion?
No, it's Yes. if there is a drop-down menu, then what are those points? If you can just elaborate on that, ma'am. So you can put in your name, your PIN code, and your mobile number. You will receive an OTP. Once you receive an OTP, you will have an access to writing space. I don't think we can restrict people by writing on subjects. I think people should write what they honestly feel the Indian National Congress should raise in our manifesto, and we give them that liberty to do so. We will, of course, read every suggestion and classify it subject-wise, because the manifesto eventually will have different sections, and each section will deal with one or two related subjects. So when you send a suggestion, say you may send your suggestion on 3 or 4 subjects. It's our responsibility to segregate them and put them in different boxes, and then read them, understand them, reflect on them, and then make a manifesto point. That's our responsibility, and we will do it. उदाहरण के लिए मेरे पास अभी एक ईमेल आया जिसमें 51 बिंदु उन्होंने लिखे हैं, अलग अलग विषय पे एक साथ 51 बिंदु लिखे हैं। बॉम्बे के एक साथी हैं, तो हम लोग की जवाबदारी रहेगी उनको अलग अलग बॉक्सेस में डाल। The inputs you're getting, just to get what is the sentiment, what is the mood of the nation, before Well, you finalize the... The time is so limited, unlikely, but some of it will come up in the discussions, and after the discussions, it's possible that it's possible that 1 or 2 suggestions will be shared with the public. But I think that time is so limited that we can't have a back and forth on the manifesto. Is that right? Yes. Thank you very much. Good day. Thank you.